Material master, sir. Material Customer master to material record. very No, sorry, customer material record. and other listing exclusion. Pricing procedure. After that, we started customer material record. Okay, then only customer material record. Any other topic Yes. like a material determination, listing exclusion. These are all, I think, done. Na? Let me check. Okay. One second. Let me check. Huh? Just to go to the. Yes, sir. One second. One second. Huh? Just I'm checking. This thing we have done. But customer material record we have done, right? Uh, and and one more topic, I think. I'm checking. This is also done, an item proposal, right? Customer material record, item proposal. These all topic we have done, right? Yes, Yeah. yes, sir. So, and one second, just so today, let's we'll take this topic one thing, just uh, listing and exclusion, right? Material, listing, and exclusion. The material listing and exclusion is a functionality in SAP sales and distribution module that control what materials a customer can buy. When you maintain a material listing for a customer, the customer can only buy those goods contained in the material listing assigned to the customer. And same like material exclusion, if we maintain some of the material under the exclusion, customer cannot buy that material, right? It is a customer specific, not for all customers. For the specific customer, we have this concept like which material he can buy, which material cannot be buy. So we maintain the listing exclusion condition records. Okay, the listing means what? We can create a material list for a specific customer, which allows those customers to order only those material which are maintained in the list, right? Can create a material list for a specific customer. Here mentioned a specific customer, not for all. A specific customer, we maintain the material listing, which allows those customer to order only those materials which are maintained in the list. And same for the exclusion. We also maintain an exclusion record for a specific customer, and this does not allow that customer to order those materials. Okay, so that is the concept. So material listing means the customer can order the material which is under the material listing for this customer, and exclusion. Some of the material is restricted for the customer, not allowed. It will be not ordered by customer, will be maintained under the exclusion list. So there is a see, like we have some of the 4 items we have added in the listing, but out of 4 items, one item we have added under the exclusion for the customer. So customer all item ordered, but what some of the item which is not under listing, it is under the exclusion. Customer cannot order. So there is a one case study
for the one company Galaxy Musical Instruments, uh, there is a scope where the listing exclusion process they have configured, like the Galaxy Musical Instruments has a requirement to restrict the sale of few materials, few musical instruments. The Galaxy Musical Instruments has a requirement to restrict the sale of few musical instruments to customer who buy directly from its website. Okay. The reason where they have restricted the customer to buy the material who buying from the directly from the website is some retail customer complain to the Galaxy Magical Instrument if they are buying customer from their direct website, they not come to the retail shop to buying the goods. Okay, musical instruments. So the company has decided that some of the material which will be displayed, yeah, it will be shown in the website, but it will not allow to the customer who directly come to order. Okay, that will mean that is the exclusion list. So that concept used by company there, but basically concept of listing exclusion is very simple. The customer who buying the goods for specific customer, not for all. We maintain the listing for the customer and the customer who cannot buy the product, which we maintain under the exclusion. Okay. It is a feature. It is a feature that restrict customer to ordering only some of the specific product because that product is another solution for the customer. Okay. So both functionality we use in the listing exclusion for the customer, like the customer who only buy a specific list of material. So we can maintain the material for this customer under the listing and to prevent to the some customer, some specific customer from ordering particular material even available also. It's not allowed. Okay, clear? Uh-huh. So there is a configuration process we'll see. We have under the listing exclusion, the listing and uh, we have first condition technique. Okay, condition technique, so you know, na? We have condition technique. We have what condition table, then access sequences, then condition type and procedure. It's similar to the pricing procedure. Okay. No, no. And then we assign procedure to the sales document type. And then finally, once configure, they mean the job to maintain condition record. So condition record for customer who can buy, who cannot buy the material. Now here, first we'll go to the condition technique for the listing exclusion here. See, है ना? There is a condition table, access sequence, types and procedure, and activate listing user to the sales document type. So first we'll go to the condition technique, and we follow the step like SPRO, then SAP reference IMG, sales and distribution, basic functions, and listing classification.
SPRO, then SAP reference IMG, then sales and distribution, basic functions, and there is a listing class exclusion. Now here listing class exclusion, we have first maintain condition table for listing exclusion. Okay. So now here we go to the maintain. Maintain condition table where we have fields. So basically in this condition table, we have required two fields like customer material because it is customer specific who the customer can order, the customer cannot order. The field we required only two for the condition table that is called customer and material field. The customer and material, these two field important under the condition table number 001. Now I will go back to the next. Maintain access sequences for listing slash exclusion. Okay. Now here, continue. And there is a two access sequence. One is for listing. We have a standard A002 and for exclusion B002. Okay. And this access sequence, select the line, double click the access left side to this condition table assigned here. Okay. So you can use standard or we can copy and rename also, or otherwise you can create new also. I'm selecting a standard, copy it, rename, just like I'm giving the name Godrej or something. CJ, Godrej, access sequence. Yeah. Yeah. Just give me one second. Huh? Just one second. Huh? Hello, are you Yes, there? sir. Yes, sir. Ah, one second. Huh? Just I'm copy and rename and enter, then copy all and continue. So now when copy, system will copy the condition table here. You can see, the condition table copied and save. Same with for exclusion also. Okay. Select the main, this, sorry, option, uh, the B002 and copy edge and rename. Just like I'm giving the name, short name, and here, uh,
exclusion. Okay. Enter, copy all, and click on save. So here also we copied and rename. Okay. One is material listing, another one is exclusion. Okay. And this condition access sequence has condition table assigned. And next we have maintain listing slash exclusion type, just like condition type. 1 second, huh? One. To maintain listing slash exclusion type here. Here also we do the same like new entries and give the, like for example, Godrej listing condition type. Then PT 01, and there is also uh, listing. And under the access sequence, this access sequence column, we assign the access sequence for listing. This one, na? See, right. And same we define one more condition type for exclusion, and there is uh, a access sequence for exclusion we assign. The condition table assigned to access sequence and access sequence assigned to condition type. And now we'll go to the procedure for listing exclusion here. Okay, so you started doing some practice here. Hmm. Yes, sir. It's showing the request numbers. So now we have completed, and next is procedure. Procedure also we have two. Now one is for listing, another one for exclusion here. Right? So now here we have procedure for maintaining listing slash exclusion here. Uh, Now here, let's see. There is already a standard procedure here, A double zero zero double zero one developing control data. See, this procedure has condition type assigned. Or B double zero zero one, that is for exclusion already had. And usage actually here, it's G. G stands for PNL listing exclusion. This is used for listing exclusion only. So we can create new procedure like let's see here. I'm giving the Godrej, yeah, GD 001. No, this is for Godrej listing procedure. And select the line, left side double click on the control data, new entries, and assign the condition type for listing here. GD 01. And same we do for exclusion. New entries and same, just go to the one more procedure. This for select the line, left side double click on control data, new entries, under the condition type column, we assign the condition type for exclusion here. So now we have four step condition table, access sequence, condition type, and procedures.
Okay. After that, this procedure will assign to the sales document type. Which document type we use for order? We assign there. Okay. Go back and it is a activate listing slash exclusion by sales document type. Activate listing slash exclusion by sales document type. Now here, we select the order type here. Right. This is the order type, and here we assign the listing procedure, and this column we assign the exclusion procedure. We assign here. And click also. So now we have completed this configuration. Next, the end user job to maintain the condition record, like for the customer wise, who the customer, we maintain under the condition record. The condition record, we have a transaction code VV01 to maintain. Like suppose we have a two customer, but only one customer we apply for this listing, so we can maintain only for one customer. Okay, not for all customers. So we go to maintain the condition record for material in listing exclusion. Okay, let's see. I'm going to show you. There is a three transaction code, create VB01, change, edit VB02, and display VB03. Okay, three transaction code we have. And before going to, let's see, I'm just going to check a list of material and we'll decide. M60 transaction code to see the list of material. ETC1. These are plant we have. See, for example, we have this material 71407141 and 71427151. Okay. So let's see, we get two material we maintain the listing, another two material we maintain as the exclusion. So 71407114 is under the exclusion, will not allow to customer. At 71427115 we maintain under the listing. 41 and 42 and 51. And 4041 is exclusion. Now how to maintain? Let's see. We go back to the main page and there's under the logistics, then sales and distribution, under the master data, products, then there is a listing slash exclusion. Now here VB01 create, VB02 fill, and VB03 display. Okay, three transaction code we got. That's fine. Now here VB01 create. And here we select the first listing condition type GD01. This is enter, and here enter, and we give the sales organization, distribution channel, and customer to whom we're going to maintain this listing. Okay, we have two customers. For only one customer we apply, not for second customer 1005. It has validity. So here I'm maintaining like 7142. I think let's better check in the column. And there is a material wise supplying area, like plant wise. Check. 1 second. Material wise. 1 second. Just taking the.
fill by sales. हाँ, तो 7151714 है ना, मेंटेनिंग लिस्टिंग 7151714, 7142 enter and 7151. This is under the listing for this customer. Okay, see, and same customer we maintain the exclusion also back and come back to VB01 and now selecting the exclusion condition type. Now here 71140, 71141. Two material we have maintained the exclusion, two material we have maintained under the listing for this customer. See, later if you want to do any changes, modification, so go to the VB02 and select the condition type and enter. And you want to change any information to give the sales organization, distribution channel customer, click on execute. Suppose you want to add few more material, and you can add here. This is for change mode. And display is only display. No need to change anything else. See, only display mode. Now how it works? This is for only with this customer we applying. So when you go back to the create a sales order for this customer, VA01, I'm selecting the order type, sorry, ETOR, and here customer. Let's see, for example, I'm selecting K1142. This material under the listing for this customer. So calling this product. Okay, it's a pretty good option, no problem. Enter, the system accepted. K1151, this is also system will accept. Okay, but when you call K1140, this material, any single quantity, system will not accept it because this material is excluded for this customer. 7140 and 7141 also. See, both are not allowed. Okay, clear? Yes, sir. But thing is that suppose we have, for the time being, you have maintained the exclusion for these two products, 7140 and 7142. Later, you want to remove from the exclusion. Let's see, for example, I'm calling this product here 7140 because this is under the exclusion list. System giving a message, this material has been excluded. Okay. But for the time being, we have maintained. Later, we want to remove from the exclusion. Let's see. I'm going to the VB02 transaction code for exclusion condition type. Enter and this customer, I'm just removing this one. I'm not maintaining the list exclusion. I remove from there. I will remove the from that list. Then again come back to the here. Now what message will come? Is a different message will come. That time it's coming excluded. Now it's coming 714 is not listed and therefore not allowed. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने if you have maintained the condition record for this customer इधर listing exclusion जो भी हमने maintain किया तो every material must be maintained under listing for this customer समझे यानी कोई भी मटेरियल जो भी है वो लिस्टिंग होना जरूरी है ऑर्डर के लिए ठीक है इवन दो you have removed from the exclusion also system will not accept system telling this material is not listed for this customer right इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने ये जो कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन किया है इस कस्टमर के लिए तो अब हर बार एवरी टाइम व्हेन न्यू मटेरियल कम टू द सिस्टम फर्स्ट इट रिक्वायर्ड इन द लिस्टिंग फॉर दिस कस्टमर देन सिस्टम विल एक्सेप्ट द ऑर्डर फॉर दिस लिस्टिंग करना जरूरी है ठीक है तो अभी यहाँ Yes, पे sir. बोल रहा है कि नहीं नॉट लिस्टेड बिकॉज हमने यहाँ से रिमूव कर दिया ठीक है रिमूव कर दिया यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ठीक है रिमूव हो गया लेकिन फिर भी नहीं ले रहा है क्यों क्योंकि अब हमको एक्सक्लूजन लिस्टिंग में डालना पड़ेगा तो हमको टू द GT01 इंटर एंड दे दीजिए 7140 है ना हम एडिंग ऐड कर दिया
once we add, now come back system elected, ले लिया, समझ में आया क्या यस मतलब? सर। ये है यस सर। कॉन्सेप्ट कि लिस्टिंग होना जरूरी है। अगर लिस्टिंग नहीं होगा तो सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट दैट। हाँ, फॉर अदर कस्टमर इट इज एप्लीकेबल, है ना। लेट्स सी फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू द अदर कस्टमर फॉर दिस ऑर्डर। दिस इज द कस्टमर 1010, है ना, 10 एंड क्या था दूसरा, एक और कस्टमर है हमारा, दो है। आई एम सेलेक्टिंग वन मोर कस्टमर, तीन, विच वन, 1010, हाँ। सी दिस कस्टमर के लिए नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज एप्लीकेबल। क्यों? कि ये कस्टमर जो है ही कैन ऑर्डर एनी प्रोडक्ट, 7141 ऑल्सो ही कैन ऑर्डर। सी, अच्छा ये नहीं, ये 10, सॉरी सॉरी, हमने 1005 ले लिया, गलती थी फिर। वन सेकेंड, हाँ, जस्ट VA01, आई एम सेलेक्टिंग द कस्टमर 1010, है ना। अच्छा, इसके लिए प्राइसिंग procedure not determined because we have not maintained the pricing, custom pricing procedure, है ना। pricing procedure is one of the parameter should be maintain the customer, otherwise system not active, okay। तो इसलिए वो जरूरी है। कस्टमर में हमको, कस्टमर यू वांट टू मेंटेन द प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, तो दैट शुड बी मेंटेन द कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर हियर इन द फर्स्ट टाइम ऑर्डर। यहाँ पे हमने नहीं मेंटेन किया, इसीलिए नहीं ले रहा, ठीक है। अब ले लेंगे। कम बैक, अब लेंगे ऊपर VA01, ठीक है। अब फॉर दिस कस्टमर आई एम कॉलिंग दिस मटेरियल, नो इशू, सिस्टम विल एक्सेप्ट, ओके। इवन 71, एक और था ना, 42 वाज ऑल्सो अप्लाइड, इट विल एक्सेप्टेड, ठीक है। 7151, इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, ओनली एप्लीकेबल हो फर्स्ट कस्टमर, बिकॉज वी हैव मेंटेन द कंडीशन रिकॉर्ड को ओनली फर्स्ट कस्टमर, दिस मटेरियल इज लिस्टेड फॉर दिस कस्टमर, दिस मटेरियल अंडर द एक्सक्लूजन फॉर दिस कस्टमर, फर्दर कस्टमर इट्स वर्क, but for same customer, we maintain the condition record, it not work, clear? हाँ। सर अभी सपोज हम लोग ने एक कस्टमर को लिस्ट किया, ठीक है, हाँ बाद में उसको फिर से एक्सक्लूड में डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली वो हाँ लिस्टिंग में से निकल जाएगा क्या? हाँ हाँ, नहीं लिस्टिंग से नहीं निकलेगा। लिस्ट तो कंफ्यूज हो जाएगा सिस्टम, अगर मैंने यहाँ अभी देख लेते हैं, वी ट्राई, हाँ। अभी ट्राई कर ओके। लेते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, यहाँ पे हम आए, पहले हम देखते हम्म। हैं कि एक काम करते हैं, VB01, सॉरी 2, हम जाते हैं लिस्टिंग में, ठीक है। ये लिस्टिंग में हम गए, तो ये कहना चाह रहे हो कि ये प्रोडक्ट, 1 सेकेंड, नो दिस इज नॉट कस्टमर, 1 सेकेंड, हाँ, 1005, यहाँ पे गए, जो भी है रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब 715 जो इसमें लिस्टिंग में है ना, यू वांट यू टेलिंग कि दिस शुड बी एक्सक्लूजन आल्सो, है ना। तो व्हाट विल या। हैपन, हाँ, तो आई एम गोइंग टू द GT02, तो सेम कस्टमर आई एम एडिंग 7151, ठीक है। अब यहाँ ऐड कर दिए दोनों में, तो सिस्टम को हम कंफ्यूज कर रहे हैं। सिस्टम को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो क्या सिस्टम देता है रिजल्ट, देखते हैं, है ना। VA01 इंटर, हाँ, 1005 7151, है ना। दिस इज द प्रोडक्ट बोथ वी हैव मेंटेन, लिस्टिंग में भी एक्सक्लूजन में भी। पहला प्रेफरेंस एक्सक्लूजन को देगा, ठीक है। ये गिव द प्रेफरेंस फॉर ओके। एक्सक्लूजन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन टू एक्सक्लूजन, सिस्टम पहले रीड ओके। करेगा एक्सक्लूजन को, बाद में रीड करेगा लिस्टिंग को, ठीक है। ओके। समझ में आया? यस सर। अगर तो हमने अगर ये लिस्टिंग में, प्रोडक्ट को मैं एक्सक्लूड करूंगा तो ऑटोमेटिकली लिस्टिंग में जाएगा ना, क्योंकि लिस्टिंग में ऑलरेडी है वो, हाँ, तो लिस्टिंग फिर में से है लिस्टिंग ना, करने की तो जरूरत नहीं। हाँ, लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं, इसलिए तो बोले एक्सक्लूजन करने की जरूरत है। लिस्टिंग तो मैंने एग्जांपल सर। दिया कि अगर इस कस्टमर को हम चाहते हैं कि आउट ऑफ 190 प्रोडक्ट शुड बी लिस्टेड फॉर दिस कस्टमर, 10 प्रोडक्ट विल नॉट लिस्टेड, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं, 90 को लिस्टिंग, 10 को एक्सक्लूजन। लेकिन हम कहीं कहीं चाहते हैं कि वही प्रोडक्ट एक्सक्लूजन में हो, तो उसके लिए हम कंडीशन रिकॉर्ड बनाएंगे सिर्फ एक्सक्लूजन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर देख रहे हो ये वाला कंडीशन सेल्स डॉक्यूमेंट है, वन सेकेंड, हाँ। अभी हमने जो लास्ट स्टेप में देखा था असाइनमेंट ऑफ लिस्टिंग स्लैश एक्सक्लूजन, है ना, प्रोसीजर। तो हम यहाँ क्या करेंगे
कि हम एक ही चीज को अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, सबको नहीं अप्लाई करना चाह रहे, हम लिस्टिंग को नहीं अप्लाई करना चाह रहे, एक्सक्लूजन को ही अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाला जो एक्टिवेशन है ना, इसमें हम सिर्फ ये वाला कॉलम को छोड़ देंगे। देखो जैसे किसी ने यहाँ ये दिया हुआ है, हमने सिर्फ एक्सक्लूजन को डालना है। ठीक है, क्लियर, क्लियर। यस सर, यस सर। हाँ, जब हम एक ही को लेके चलना चाह रहे हैं, यू वांट टू गो विद एनी वन प्रोसीजर, तो हमको लिस्टिंग की जरूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ एक्सक्लूजन ही चाहिए, क्योंकि इस कस्टमर को हम ये 3 प्रोडक्ट एक्सक्लूड कर दिए। तो हम ओनली टेक द exclusion. For that time, we do only configure the exclusion and no need to maintain the listing procedure here also. Right? Clear? यस सर, यस सर। समझ में आया? तो सर कोई ठीक प्रोडक्ट है? हम लोग परमानेंटली एक्सक्लूड कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, परमानेंट भी कर सकते हैं। कस्टमर के लिए या मेरा परमानेंट प्रोडक्ट करने डिस्कार्ड की हो गया तो? नहीं, वो मटेरियल मास्टर में है, वो यहाँ पे नहीं है। वो परमानेंट डिलीशन ओके। ऑप्शन में चला जाता है। जैसे मटेरियल मास्टर में एक ट्रांजेक्शन कोड है MM06, मटेरियल मैनेजमेंट में है ना, MM06 में क्या है, फ्लैग फॉर मटेरियल डिलीशन, इस पे हम डाल दिए। तो डिलीशन में सर वो मटेरियल डिलीट होगा क्या, दिखाएगा उसमें? डिलीट ऑप्शन में चला जाएगा, होगा नहीं, आपको मैसेज दे देगा, वार्निंग दे देगा। अगर वही जैसे मैंने मटेरियल का इसको अगर मुझे पास्ट हिस्ट्री चेक करना है, मुझे डिलीट नहीं हाँ करना है, बट परमानेंट एक्सक्लूड करना है, पास्ट हिस्ट्री हाँ, कितना प्रोडक्ट बिका था तो निकाल सकते थे हिस्ट्री? क्या क्या इसमें नहीं दिखाएगा, इस पे वो नहीं दिखाएगा। इस पे सिर्फ दिखाएगा कि हमने ये डिलीट ऑप्शन में डाल दिया। ये तो मटेरियल मैनेजमेंट में है ना, उनका काम है कि डिलीशन ऑप्शन में डाल दे। मान लो कि हम एक ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं और ये मटेरियल हमने डाला, सिर्फ वार्निंग मैसेज देगा। ठीक है, 7151, देखते हैं क्या देता है। हाँ, है ना, ये मैसेज दे देगा, मटेरियल सेवन यस। वन फाइव इज मार्क फॉर डिलीशन, तो ऐसे मैसेज दे देगा कि ये डिलीशन में चला गया है। ठीक है, करेक्ट। तो वो करेक्ट। हम कर सकते हैं, लेकिन अब उसको हम ये नहीं कर सकते कि एक्सक्लूजन में है तो कितना मटेरियल एक्सक्लूजन में दिखाएगा, लिस्टिंग में कितना दिखाएगा, वो नहीं। वो हमको फिर वो एक इन्हांसमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको कुछ टेबल्स वगैरह पे कंट्रोल रखना पड़ेगा कि ये टेबल्स के ऊपर ही वो हो। ठीक है, कि इतने ही पे वो रिपोर्ट आपको, यू वांट टू से रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट तैयार करना है ना, रिपोर्ट तैयार करना है कि कितना एक्सक्लूजन में डाला, उससे कितना ऑर्डर आया, कितना लिस्टिंग आया, तो वो रिपोर्टिंग पे है। तो रिपोर्ट के लिए वो एक अलग क्राइटेरिया होता है कि आप किस टेबल से वो उठाना चाहते हैं। अगर रिकॉर्ड चाहते हैं कि एक्सक्लूजन वाला रिकॉर्ड उठाना चाहे कि इतना मटेरियल एक्सक्लूडेड था, तो वो रिपोर्ट से होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है कि नहीं, देखते हैं ट्रांजेक्शन को, VV0 तो नहीं, हाँ, ये एक तो हो गया, ये वाला तो रेफरेंस से बनता है, इसलिए कंडीशन रिकॉर्ड, ये वो पता नहीं, ये नहीं, वो कंडीशन रिकॉर्ड रेफरेंस से बनता है, तो उसमें एक कंट्रोल डालना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल की दिस इज रिलेवेंट टू दिस फील्ड, सिस्टम विल टेक द वैल्यू। ठीक है, हाँ यस सर। हाँ। तो ये हो गया मटेरियल लिस्टिंग एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट। फिर देखेंगे नेक्स्ट है एक और कॉन्सेप्ट, दैट टॉपिक हम ले लेते हैं, मटेरियल डिटर्मिनेशन ले लेते हैं, टॉपिक और है जो उसी से रिलेवेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है ना, मटेरियल डिटर्मिनेशन। क्या है ये टॉपिक, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर। अब जैसे बताया ना तुमने कि बहुत कौन सा मटेरियल आउटडेटेड हो गया है ना, वो है नहीं अभी तक, रिकॉर्ड आपने रिकॉर्ड में नहीं है, वो डिलीट हो चुका है या आउटडेटेड हो चुका है, रिकॉर्ड से बाहर चला गया है। ठीक है, या हो सकता है अपग्रेड हो गया है, पुराना मटेरियल से नया मटेरियल अपग्रेड हो गया, फिर भी हमारे रिकॉर्ड में वो रखा हुआ है और कस्टमर भी वही को ऑर्डर कर रहा है। तो अब वो रिकॉर्ड में तो दिखा रहा है, बट वी स्टिल डोंट हैव एनी क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ दिस इज आउटडेटेड, है ना, बहुत सारा आउटडेटेड हो गया, हमको मालूम ही नहीं कि प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया है और अपने हमारे पास है नहीं अभी। जैसे एग्जांपल ले लो, मोबाइल इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, मोबाइल बनाती है जो कंपनी, हर महीने 6 महीने पे नया अपग्रेड होते रहता है मॉडल। तो अपग्रेड होने के बाद पुराना मॉडल मार्केट से गायब हो गया। अब हमको मालूम है कि पुराना मॉडल अभी भी है मार्केट में और हम उसी को ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वहां यूज होता है कि मटेरियल डिटर्मिनेशन, कि अगर इफ कस्टमर ऑर्डरिंग पर्टिकुलर मटेरियल एट दैट मटेरियल इज आउटडेटेड, नॉट अवेलेबल या अपग्रेडेड विद न्यू मॉडल, so we can swap, we can exchange the material from one to another in the order page by using this technique that is called material determination. So material determination uses the condition technique
to swap one material for another in a sales order when certain condition apply. यानी कि हम चाहते हैं कि जैसे कोई कस्टमर ऑर्डर करे वो मटेरियल नहीं है, उसके बदले दूसरा मटेरियल सेम फीचर का ऑर्डर पे आ जाए, स्वैप हो जाए, स्वैप फ्रॉम वन टू अनदर मटेरियल द ऑर्डर पे. So this is called material determination. Yeah, we can say substituting one product with another product. It's called material determination. ओके. ये हमेशा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, तो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, हम प्रमोट सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई कस्टमर रेगुलर परचेज जो कर रहा है रेगुलर प्रोडक्ट, हम उसको थोड़ा देर के लिए स्टॉक करके नया प्रोडक्ट को उसको बेच देते हैं ना. इससे प्रमोट हो जाता है. तो अगर वो ऑर्डर कर रहा है पुराना मटेरियल प्रोडक्ट, तो इट विल बी रिप्लेस बाय न्यू मटेरियल इन द ऑर्डर पेज. इससे क्या हो गया, हम उसको सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं. तो कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि द मटेरियल विच ऑर्डर बाय कस्टमर इट विल बी रिप्लेस बाय अनदर प्रोडक्ट इन द ऑर्डर पेज बाय यूजिंग दिस टेक्निक. So material determination is one of the technique we use to swapping or substituting from one to another in the order page, exchanging. There is various reason like substituting discontinued material with newer material. Yeah, seasonal product, we promoting the seasonal product, outdated, not available, yeah, new model launch, any reason we can see. So this technique we use for material determination for swapping. जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग रेगुलर प्रोडक्ट 750 ml, but same product with extra 250 ml offer product we have another product offer product which has extra ml. So instead of a regular product, customer can purchase new product. It will be automatically replaced in the order page. Yeah, for example, we order 4711 product, it will be replaced by new product in the order page M1. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक. यानी कि जो प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है वो नहीं है, उसके बदले दूसरा है अवेलेबल. तो यहाँ भी वी डू द सेम कॉन्सेप्ट, कंडीशन टेक्निक, दैट क्रिएट कंडीशन टेबल, मेंटेन एक्सेस सीक्वेंसेस, maintain condition types, maintain procedure, and assign procedure to sales document type. Or then we define the region. What is the region for substitution? So we have to follow this process. Okay. So we'll take this topic to configure. Well, let's start it. Now we'll go to the first condition table, then action sequence, condition type, and maintain procedure, and then assign procedure to the sales document type. PRO, then SAP reference ING, sales and distribution, basic functions, then material determination, and then maintain prerequisites for material determination. So here we have condition table, then access sequence, condition types, and maintain procedures. So here we have option given by SAP. You can create new condition table as per the requirement. You can add any new fields.
So now here, let's see, we go to the create condition table. Transaction code is OV16. And here, this is the condition table number we have, and a 001. This condition table has only one field, material entered. So want to create new condition table. So we can use any condition table number up to 500. And let's see, for example, I'm giving 501. Enter. System accepted. Now here we add like a material determination based on customer on material, not for all customer, for a specific customer on material intent. So which one we required, we can select. Now we have added and click on generate record. Yes, and save under the package number. So condition table we can use standard or we can create our own condition table. Then see, now we have we define condition table. This is standard condition table we have. Now we go to the next condition table assigned to the access sequence. So go to the maintain access sequence here. Uh, Maintain access sequencing. We create new access sequence here. So here we have a standard C access sequence A001. Select double click access stage. So here is already condition table assigned. है ना? So we can create our own new entity and give the access sequence name. है ना? Enter and click on save. Select the line. Left side double click the access stage. New entries and condition table number we can give like that. And can assign one by one condition table here. Select double click on the fields. Click and click on save. So condition table we can define and assign to the access sequence here. Okay. Now next condition table we define, then go back to the next step, access sequence, and then condition type here. 1 second. Define condition type for material determination. Here also same way like new integer, give the condition type for material determination. GD gold and Godrej. Access sequence column, we assign the access sequence to material determination. Condition table assigned to access sequence and access sequence assigned to condition type here. And then condition type assigned to the procedure here. So back and there is a maintain determination procedures. Now here we go to the maintain determination procedure here. Uh, New entries and give the procedure name. Yeah.
Select the line, left side double click the access the control data, new entry, and assign the condition type of material determination and click on save. Then after we go back to the next assigning this procedure to the sales document. So back and close it pop-up and now here assign determination procedure to sales document type. Okay. Sales document order we select and here we assign the procedures. This one. Assign and click on so. So this is a configuration step we do. And the region why we going to replace swap. The region code we define. The transaction code we have OBRQ. And the region means why we going to replace. So there is a 4-digit code with the description and there is some option we have entry, warning, strategy, and outcome. So let's see one by one. We'll see there. What is the meaning of entry, warning, substitution, strategy, and outcome. We'll go back to the region first. We'll define the region for substitution. Uh, Define substitution region. And there is a transaction code. We have OBRQ. We can use direct. Now here region for substitution is a 4-digit code and with a specification, description, and there is a entry, warning, strategy, and outcome. Let's see. For example, I go to my new entry and give any our region code, any code character. Here, any name of a region like outdated, outdated product. For example, this is the region. And warning, sorry, entry means what is the meaning of entry? Suppose you order one product, X product, but this X product is not available. It is going to replace with Y product in the order page. But if you select the entry checkbox, then if you want the original material and not substitute to be printed in output, यानी कि हम चाहते हैं कि पुरानी मटेरियल का ही प्रिंट आउट हो तब एंट्री पे सिलेक्ट करना है एंड वार्निंग मींस बिफोर गोइंग टू रिप्लेस है ना सिस्टम विल गिव द वार्निंग मैसेज कि दिस इज द रीजन इट गोइंग टू रिप्लेस फ्रॉम दिस मटेरियल टू दैट मटेरियल वार्निंग देगा पहले सिस्टम वार्निंग मैसेज देगा कि ये रीजन है इट गोइंग टू रिप्लेस दिस वार्निंग strategy actually say the two options either is automatic replacement or before going to automatic replacement it is a show as a display mode. So we don't want to show as a display mode or automatic replacement, so it's already there. And last outcome also the automatic replacement item will be replaced. So these are concepts. So we give the region code with description and warning checkbox and click on save and complete. Now the individual will decide which material is outdated and which is new material. So they will maintain the condition record. So here just I'm going to check any material. I'm taking any product like let's see 7140 is an old model number and a free. This is old model number and it is going to replace with new model number. Okay. So let's how we do. I'm going to create one more product. Let's see. MM01. I'm just going to copy from
7140, na? This is the old product. I'm copying from that. What is the electronics and communication things? I think someone deleted, I think, the industry sector, right? Um, Anyway, I'm selecting anyone, not a problem. Electronic and until time is important. FERP. Now select view and just going to create basic data, sales organization 1, 2, general plan data, MRP1, MRP2, and general plan data storage 2, and accounting 1. Organization level for which plant? Store location, sales organization, distribution channel, from which plant? Copy the same plant, same store location, same sales organization, and same distribution channel. The benefit of copy means system will copy, है ना, new. See, this is the new, है ना, new model. I'm giving product number 101. Uh, Free. Yeah, free, है ना, you can give. Other details the same, no need to change. We are only changing the plant here, GDP1 and enter. Actually asking make to order quantity. Okay. The classification and other details fine here also fine here here. It may be price same or different, है ना? You can give the different price or same cost price. Enter, enter and click on save. Yes. So this 7190 is new model and 7140 old model, right? So 7190 we add first under the listing for this customer so that it will out. Going to add in the listing first and 7190 because any new product launch we add in the listing first. Now we'll see how to maintain the condition record for material determination. And I'm going to the main page and logistics. Under the logistic, then sales and distribution, master data, products, material determination. In material determination, there is a transaction code VB11 to create, VB12 for change, and VB13 for display. 3 transaction could we have. So we'll go back to the first transaction code VB11. We select the condition type for listing, that is GD01, enter. We have 2 condition table, which one select? You can select first in only material Y, the only material field required, and second one is customer and material both field required. See, in the customer and material. So anyone we can select. Now it has validity, valid for valid to, and we have specify the region for no, like this audit product. Here I'm calling the material 7140. This is the old model material number, and here 7190. Okay, and here unit of measurement. We maintain piece, है ना? Cartoon or piece, something piece. Okay. So here we maintain the material determination condition records. Left side the old model number, right side new model number.
After adding this, we click on save. Now, any changes, so we have option given by SAP. Later you want to do any changes, so go to VB02 and select the condition type and okay, do any changes. Yeah, it's a change mode. And display means only display. Okay. And there is a uh, how it works. Let's see. है ना? Better we see how it works. You go to the transaction code VA01 to create order. हाँ, अरे यार for example, I'm calling 7140 material number, 7140 with quantity. System first give the warning message. है ना? This material found on the basis of outdated 7190. So enter again, continue. What system will replace? New model number. Old from old to new. Got the point? System first give the warning message, then it will replace. 7140 I'm calling. System will give the warning message. Region also give and enter again. System will accept new model number. These are concept. Clear? So any so let's we take a break for 5-10 minutes. Prasanna? Yes, sir. No problem. Then we'll continue the another topic. Okay. Okay. Yes, sir. Yes. Yes. Thank you. Okay.
Then, hello. Yes, sir. Continue. कहता था हम अपने कुछ कर लेते हैं। One second, हाँ, just a second. हाँ, we'll take this topic, log of incomplete item. The purpose of incompletion log is to, like, suppose while doing the document processing, such as sales order, या quotation, or something. So some of the information is required information. If not maintained by individual, system will give the message this document is incomplete, right? Just like, see, for example, I'm going to create a order for the customer VA01. It is loaded with one two. Before going to save, we'll check this option under the edit incompletion log. The system show document is completed. Okay. Let's say, for example, payment is term is not maintained, you know, in customer master. So this information will not copy in the sales order, right? Payment term, if not maintain the customer, it will not copy in the order page. And if not copy, then we create the order for this customer without payment term and then keep on incompletion log. System will give that message. This document is incomplete. Okay? Right? Because terms of payment is important field. It should be maintained. Okay? Clear? What is the importance of terms of payment? Hello. So, yes, sorry, sir. What is the importance of terms of payment? Without payment, how can we proceed the order? No? Uh, you can create the order, but how we know the process, how we know the payment terms of the customer? So this field is important field. You know? If their field is Incomplete. not maintained the customer, just suppose I'm giving the example. This field is copied from the customer master, right? This terms of payment, right? This field is copied by system from the customer master. But suppose that terms of payment, if not maintain the customer master, so this field will not copied here. And when you create the sales order and you click on save, system will give this message. This document is incomplete. Okay. Because terms of payment is not like that. Say any other field also the same. Like some of the other field also, if not maintained, that system will give the message this document is incomplete. Right. So which field we want to make as a required field in the sales document, we maintain under the incompletion log here. Okay. So there is a 3-level incompletion log process. We have header data label, sales document item data label, and schedule line data label. Okay. 3 level we have. Okay. Header data, item data, or schedule line data. So here, let's one by one we can see. First, I go to the order level, header level. See, in the header level, we have this is the control incompletion procedure. Okay, this is the field we maintain. This control the header level information like payment term something. And there is a item level also we have. So go to the VO V7 transaction code and the item category for sales document TN. Here also we have incompletion procedure at item data level. Item data level means suppose we create the order, but you have not maintained the quantity. Let's see. And the quantity not maintained.
and click on save. System will give the message the document is incomplete because order quantity not maintained. Right? This is also controlling the item data label. Okay, we have here. And last schedule line label VOV6 transaction code. Schedule line category CP, and here also we have a incompletion. To three level we have configure incompletion procedure at header, item data level and schedule line data level. Okay. सर हेडर डेटा में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगा तो इनकम्प्लीट दिखाएगा वो? नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो कोई जरूरी भी नहीं है। हाँ अगर बहुत तो हम सारे लोग वो सिलेक्ट कर सकते हैं क्या स्पेसिफिक हाँ ये नहीं हाँ रहेगा हाँ तो? हाँ करता वही तो करने जा रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डू। ओके। ओके 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 अगर आप यूज करें which one you want, which field you want to make as a required field, you have decided. And that field you can make as a required field in the incompletion as header, item data and schedule line data लेंगे। ठीक है। हेडर और आइटम डेटा schedule line के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है। क्लियर। करेक्ट सर। हाँ। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि वी गो टू क्रिएट ए सेल्स ऑर्डर। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में हेडर लेवल पे जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम सेलेक्टिंग द कस्टमर एंड आई वांट दिस कस्टमर रेफरेंस नंबर इज a required field है ना। रेफरेंस नंबर शुड बी मेंशन रेफरेंस नंबर या फिर एनी अदर फील्ड लाइक रीजन फॉर ऑर्डर है ना। दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फील्ड। कोई भी एक फील्ड दैट इज कंपलसरी है ना। तो एक डिसाइड करते हैं कि रेफरेंस नंबर और रीजन ये दो फील्ड जरूरी है। इट शुड बी मेंटेन बाय यूजर रेफरेंस नंबर और ऑर्डर रीजन। तो सबसे पहले फर्स्ट व्हाट वी नो द टेक्निकल नेम ऑफ दिस रेफरेंस नंबर। Okay, so just keep the cursor here in the column and click on help button and then click on this option we have technical information can see है ना। the option we have technical information। तो यहाँ पे ये बता देगा टेबल इज वीवीकेटी एंड फिल्म इज बीएसटीकेटी है ना। तो यही टेबल इस टेबल के अंदर ये फील्ड टेक्निकल फील्ड है जो इसके अंदर कस्टमर रेफरेंस है। तो हमको यही फील्ड पे मालूम होना चाहिए। ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। वी गो टू द कॉन्फ़िगरेशन पेज। PRO then SAP reference IMG then sales and distribution under sales and distribution basic functions and there is a log of incomplete items. In the log of incomplete items, we have defined incompleteness procedures. And there is a first A group for header, B group for item, C group for schedule line. I'm selecting the A, sales header. Select A, left side double clicking the procedure. So there is a, we have seen, है ना, this is the 10 for inquiring quotation, 11 for standard order है ना। अभी हमने देखा ना यहाँ पे सेल्स डॉक्यूमेंट में VOV8 है ना यहाँ पे। तो ये है ना 11। ठीक। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है डिफाइन किया। तो हम सेलेक्टिंग 11 एंड लेफ्ट साइड डबल क्लिकिंग फील्ड्स। तो ये सारे फील्ड्स है जिसमें डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट करेंसी, इनकोड टर्म, प्राइसिंग डेट, टर्म्स ऑफ पेमेंट, दीज आर रिक्वायर्ड फील्ड है ना। मेंटेन है। ठीक है। ये सब मीन इसके अलावा हमको और दो फील्ड ऐड करना हो तो क्या करेंगे। फर्स्ट वी सेलेक्ट द स्टैंडर्ड 11 copy edge and giving the rename just like this one and here enter two time and copy all and continue and click on save. After copy all, then select the line, left side double click on the fields
and there is a all table in copy field copied. Now I want to add one more table. Unit and VVKD is a table and ये PST ना क्या था अपना यहाँ पे लेट्स सी है ना टेक्निकल इंफॉर्मेशन BSTKD है ना वी एड BSTKD तो दिस इज फॉर कस्टमर रेफरेंस नंबर और ये ऑन विच स्क्रीन इट कम अभी हम कहाँ पे हैं कस्टमर का हेडर लेवल पे है ना हेडर लेवल पे तो यहाँ पे स्क्रीन नेम भी है दैट इज स्क्रीन नेम ऑल्सो भी है स्क्रीन नेम फॉर कस्टमर हेडर सेल्स हेडर सॉरी सेल्स हेडर कैन सी है ना सेल्स हेडर and you want to give warning message yes no, without maintaining customer reference system will not accept and the status actually in which level we have control 01 actually order level 02 order and delivery level 03 billing level yani when you create the order that time it control when you create the delivery and billing that time it control only in billing it control so 01 I'm selecting order level status it is a control now we have added and above we can add one more fields let's see order region keep the cursor here and click on technical info help button then click on technical information VVK AGR IDP VVAK AUGR order region ये भी हो गया AU and 01 status and warning message also I give here it is two field is required field now click on save after that we back and then assign this incompletion procedures because we have copied and renamed this is our we define G1 and back and then back again and come to the assign incompletion procedure here assign incompleteness procedure here and then I come to the assign incompleteness procedure to sales document type now here we just assign incompleteness procedure to the sales document type and we select the sales document order type and this order type and here instead of 11 we are assigning G1 here ये है ना G1 type when you assign here and back then you can go to the sales document also VOB8 see VOB8 transaction code and select the sales document type order type GD here it replace and replaced by our own incompletion procedures. So now we'll see how it works. Let's we create the order. See, first system gives the warning message for customer reference number. If we ignore, okay, then system warning the origin also we ignore. है ना? System gives the warning message. We ignored also. But at the time of save, we give all the information, save. Then system will show the document is incomplete because these two fields you have not maintained. Which field? Click on edit, origin and customer reference. Okay. So how to add maintain this field? The support first line, select order region, double click, give the region for order, that is a good service say. Then click on edit next data. It's now asking customer reference number, double click. So give the customer reference number also. है customer reference number not here, actually come to the main page. Where the customer reference number here. Now again try to click on edit and click on
incompletion log, system will give this message. Document is completed. है ना? So this is the control. Whichever field you want, you have to know the technical name of that field. Any field, like for example, delivery block also you want to make it a required field. So keep the cursor and click on help button and then click on technical information. And then this is a table and this is a field name. That table and field we can add in the incompletion log at header level. Same we do for item level also. Let's see, I'm going to the item level. Define incompletion procedure. B, sales item. Select and double click the procedure. Double click. This item level we have 20. These are 20 standard. Select 20, then double click the fields. There are many fields here. है These all are fields actually copied from the system, from the material master. Plant, input, pricing date, everything copied by system. But some of the field, if not copied, because that's not maintained the material master, like a storage location or any other field. Let's see, for example, I'm going to the item label also. I'm calling the material and select the line, double click. See, and the item label, let's see, for example, sales B, I want the material pricing group should be uh, custom price. Custom price goods should be maintained at bulk buyer or occasional buyer. This field should be required field. Okay, so what we do, we keep the cursor here, press help button, then click on technical information, and a VVKD table and KONDA Konda is a field name. So that we can add. Now see. So here what we do, we go in entry and give the any table number VVKD and field name KONDA Konda. This customer price group. This customer price group basically under the sales B, item label sales B tab. So here we have a screen name. Screen name is sales item sales B. See here, sales item sales B. And also we select the status 01 for order level and warning message. Like that, we can add some other field also. We have added this field. This is a required field. For the item label also we have. If not maintained, system will not allow. Now let's see, for example, one more. Here I'm going with the shipping time, storage location. And a store location also is compulsory. What is the technical table and field name of store location? The help, technical information, VBAP table, and LGORT. So we can add VBAP table LGORT. Next store location. This is also under the sales item shipping tab, where the shipping sales item shipping. See. This is also warning message. The two field we have maintained as a required field at item data level and click on save. Now back and then we do the assignment. Go back, come to assign and complete the procedure. So we not change, create a new one. We only modify the standard one. So what we do, go to the assign and complete the procedure to the item category. Select the item category TAN and there is a 20 and select and take also. So we have done for item data label also. Yeah. Same here, like when create the order and item label, these two field is not maintained. System will again they give the same message, the document is incomplete. Now let's see. Uh, zero. This is the here also origin also I have given.
Okay, but now we go to the item level also. Suppose I'm adding the item. System first giving 1 second. System telling store location required and enter again. Then select the line, double and click on edit button, suppose in completion log and a customer price group and store location. These two fields is required. Store location means you have to maintain the store location. This is a required field. Then next we go to the edit next data. Customer price group also. So in the customer price group, bulk buyer or occasional to select. So these two fields also important to maintain. So item data level also we have a control. Which field is required, which is not required. We decide here by complete the procedure. And last level actually schedule line level. Schedule line level means suppose select the line item and double click and it is schedule line. Schedule line has like delivery date, delivery quantity, and if you click on shipping tab, this is the date of delivery, good issue date. This is the automatic system will copy. No need to maintain manually because this is copied by system in background. So there is also we have some of the option that not maintain. So system will give the message. So schedule line level actually control that logistic execution. So here under the third level, I'll show you with the uh, back and there is a define in completion procedure at C, student level. Select C, development procedure. These are है ना, 30. 30 is already maintained for the standard in completion log. Select and double click the fields. These are fields, है ना, loading date, material availability date, transportation planning date, है ना. These are already had fields maintained and which is by default system will take here and creating the order loading date, transportation planning date like that. Okay. So this is also one of the fields we have required. Want to maintain, you can maintain. So three level we have control, header, item data and schedule line level. Clear now? यस सर। सर हम लोग जो ये Hmm. कर रहे हैं अभी, ये जो मैंडेटरी कर रहे हैं हम लोग, जैसे मैंडेटरी होगा हाँ ये फील्ड, वैसे है ना? हाँ हाँ तो उसमें हम हाँ। लोग जो मैंडेटरी का सिंबल आता है, स्टार नहीं तो ड्रॉप डाउन वाला एरो, वो नहीं आता है क्या? नहीं उसमें वो नहीं आएगा, वो ऐसा टिक मार्क वाला ना जो कह रहे टिक मार्क। हाँ वो नहीं आएगा, यहाँ पे टिक मार्क नहीं आएगा। यहाँ पे एक ही काम होगा जब हमने कोई चीज मेंटेन नहीं किया, जैसे कि एग्जाम्पल हमने स्टोर लोकेशन हटा दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसा वार्निंग मैसेज देगा, ठीक है, हमने स्किप कर दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन एट हाँ द टाइम ऑफ सेव सिस्टम विल नॉट अलाउ, ऐसा हाँ यहाँ पे देखा। ये हाँ, कब इसलिए दूसरे देता दिले, है? नवीन दिले। हाँ ये दूसरे इसलिए देता है कि इंड यूजर का काम क्या है कि बहुत सारी चीज को स्किप करते चला जाता है ना, बहुत सारी हम्म, चीजें स्किप कर देता है। वो देखता है कि ये चीज जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं वो जरूरी है, अगर वो स्किप करेगा सिस्टम तो अलाउ कर देगा स्किप करने, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेव सिस्टम विल नॉट अलाउ। सिस्टम बोलेगा नहीं ये आपको मेंटेन करना जरूरी है, यू मस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग डेटा, यू कैन सी द रीड मैसेज, यू मस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग डेटा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमने वहां पे कंट्रोल कर दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, दैट फील्ड इज रिक्वायर्ड फील्ड। तो अगर ये फील्ड नहीं मेंटेन है तो वो नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वार्निंग मैसेज, वार्निंग तो दिया लेकिन वो ऐसा सिंबल नहीं आएगा कि ये मैंडेटरी ना, तो फिर तो वही बात हो गया ना कि हमको पहले से मालूम है कि ये फील्ड मैंडेटरी है तो हम उसको पहले भर लेंगे, नहीं कि ये कब होता है जब हम सेव करने जाते हैं तब सिस्टम हमको अलर्ट देता है, नहीं तो हम सेव करने से पहले भी हम चेक कर सकते हैं। सेव करने के पहले हम क्या करेंगे, सारा कुछ मेंटेन कर लिया, अब में एक ऑप्शन है एडिट, यहाँ पे चेक करेंगे मेक श्योर कि एनी फील्ड इज मिसिंग और नॉट, इनकम्प्लीशन लॉग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने आप दे देगा कि अगर नहीं मेंटेन है तो दिस इज द फील्ड इज नॉट मेंटेन, तो यू हैव टू मेंटेन दैट फील्ड। और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बिना मेंटेन के आगे बढ़ सकते हो, है ना, सेव कर सकते हो लेकिन सेव करने के बाद इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। यस सर। क्लियर नो? करेक्ट सर, यस सर। हाँ तो ठीक है, आज इतनी ही तक रहने देते हैं, बहुत सारी टॉपिक हो गई। तो चलेगा सर, कल का, कल मॉर्निंग में 8 o'clock करेंगे, है ना, 8 to 10, ठीक है, हम चलेगा सर, लोग चलेगा, यस नया टॉपिक ले लेंगे। ओके देन, यस सर, चलेगा, चलेगा ओके सर। चलो, थैंक यू गुड नाइट, हाँ, सर। गुड नाइट।